सर की मर्जी, हम तो ताबेदार हैं। नहीं वो कह रहे इसीलिए तो इस्लामाबाद में हालात खराब हो गए कि पठान इधर आ गए। सर ये गुस्ताखी मैं कर सकता हूँ यानी सर आप हाँ जी B5+1D US exit its implication quickly. 10 बजे से Oh my God. तुम पेपर लिख रहे हो till 1 और इसके बाद सर अफसर बनना तो आसान काम नहीं है। सर माइक सर मतलब मेरा ये सर माइक ओके सर माइक करीब कर लिया। मैं करीब करूँ ओके कश्मीरी जल्दी करो एक तो कश्मीर से हमारी आप मानेंगे आपके मैं कश्मीरी नहीं हूँ। कि मैं कश्मीरी नहीं हूँ। सर लिखवा ले लिखवा ले। ये कौन थी ये कौन था थी आजकल लड़कों ना याद रखो ये जो ती है ना ये बड़ा मसला है नहीं थी। सर मुझे पता है कि कौन थी। कौन थी ये पता है जरा बताओ तो सही मैं कितना निकाल सकता सर वो वाली वो अच्छी सर वो वाली वो वही अच्छी Why is it so good? No? Yes. Okay. हाँ जी हम शरारत नहीं करते Now B5+1 deal बेसिक्स सबको पता है हमने सिर्फ हाईलाइट करना है The key points of the B5+1 deal क्या थे? सर माइक Sorry, अब ठीक है? Now, number one, सबसे बड़ा था कैसे? Iran would dismantle its nuclear capacities. Iran अपने nuclear capacities और higher enrichment capacities, यानी higher enrichment capacities को dismantle करेगा. और Iran is allowed to use uranium for civilian purposes. दूसरी बात, तीसरा, ईरान को transport the highly enriched uranium, जो enriched है, stored है, वो safe destination means रशिया को export करेगा. इसी तरीके से फिर in return sanctions would be removed from Iran. Sanctions ईरान से remove किए जाएंगे. बड़े बड़े क्या है? नंबर वन, सबसे पहले जो ऑयल, गैस एंड अदर प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पे सैंक्शंस हैं. उसके बाद फिर लेटर स्टेज में द इंपोर्ट ऑफ वेपन्स पे पाबंदी खत्म होगी. उसके अलावा फिर the frozen accounts would be unfreezed. जो फ्रोजन अकाउंट्स हैं उनको अनफ्रीज किया जाएगा, जिसमें $46 बिलियन प्लस है. $46 बिलियन प्लस. ये फिनोमेना शुरू हुआ 2013 में, अक्टूबर 2013 में. 2015 जुलाई में परमानेंट डील साइन हुई. जुलाई 2015 परमानेंट डील साइन हो गई.
इस डील में the 5 permanent members of the UN Security Council plus Germany entered into a deal with Iran. मजीद क्या हुआ? An observer team or committee was appointed. एक observer committee बना दी गई that would comprise upon a member each from the B5+1 and Iran. B5+1 and Iran. और उसको head करेगा the member from IAEA. This committee would report on the performance of Iran. ये कमेटी रिपोर्ट करेगी on the performance of Iran. The continuation or cancellation. उसके बाद एक और point. No country could unilaterally move out of the deal. कोई भी मुल्क उससे unilaterally move out नहीं करेगा, opt out नहीं करेगा. The deal would either continue or या तो कंटिन्यू करेगा या डिसकंटिन्यू करेगा on the basis of the recommendation being made by the team, the committee. जो GCPOA की कमेटी है वो GCPOA भी इसको कहते हैं, ठीक है ना? So एक मुल्क किसी यूनाइटेडली निकल भी नहीं सकता. दूसरा, ईरान की परफॉर्मेंस जो डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट, उसी की बुनियाद पे ईरान से सैंक्शंस रिमूव होते हैं. ये दो बड़ी बातें हैं इस कमेटी में, ठीक है ना? अब ट्रम्प आफ्टर एंटरिंग द ओवल ऑफिस, उन्होंने क्या किया? वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप ही टुक वाज टू विथड्रॉ फ्रॉम द the deal that was called a historic deal by Obama. उस डील से निकल गया जिसको हिस्टोरिक डील ओबामा ने कहा था. तो bylaws or as per the agreements of the GCPOA or P5+1 deal, America violated the terms and conditions. अमेरिका ने टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट कर दिया, क्योंकि कोई भी मुल्क किसी यूनाइटेडली मूव आउट तो नहीं हो सकता था, फिर भी उसने कर दिया. क्यों किया? वन, द प्रेशर ऑफ इजराइल या इन्फ्लुएंस ऑफ इजराइल. दूसरा, इन्फ्लुएंस ऑफ जीसीसी, स्पेसिफिकली सऊदी अरेबिया. हमने देखा कि ट्रम्प रिवाइव कर रहा है रिलेशंस विद KSI. दो, तीसरा, इलेक्टोरल मैनिफेस्टो में था ये कि if he is elected to the house or to the White House, he would withdraw from the deal. तीन बातें हमने कही इस दुनिया में. Now, अब implications of the deal. Implications क्या होंगी? Iran long been under sanctions and international isolation. Since 79 और फिर 97, लेकिन सबसे ज्यादा सेवियर कब हुआ? 2008 onward. उस आइसोलेशन या सैंक्शन से क्या लॉस हुआ? एनुअली एटलीस्ट $100 बिलियन लॉस हुआ.
$100 billion in the last 2008 से 2013 each year होता रहा, वो भी in the context of energy export. क्योंकि Iran being the second largest exporter of gas, fourth largest producer and exporter of oil रहा. So, अब वही चीज अंदर थ्रेट है, वही थ्रेट पे है यूएस के डील से निकलने से, तो सैंक्शंस का रिवाइवल होगा. एक कैसा भी क्लियर हो रहा है. Sanctions are of three kinds, तीन किस्म के होते हैं. A country against a country, regional organization against a country, country against a country, US against Iran. Regional organization against a country, GCC, European Union against Iran, for example. Tisra, UN against a country. Now, under P5+1 deal, Iran succeeded with the process of the removal of sanctions by UN and EU started. EU, US और UN ने जो सैंक्शन लगाए वो रिमूव होना शुरू हुए. जीसीसी ने रिमूव नहीं किए, जीसीसी ने सैंक्शंस रिमूव नहीं किए, लेकिन यूएन ने शुरू कर दिए, ईयू ने शुरू कर दिए और यूएस ने शुरू कर दिए. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यूएस विड्रॉल है अलोन, यहाँ से बकिया ममालिक का विड्रॉल नहीं है, तो रिवाइवल ऑफ द सैंक्शंस बाय यूएस होगा. दूसरा, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन threatened the multinational companies, particularly energy companies, to withdraw their installations from Iran, कि वो अपने installation ईरान से withdraw करें, otherwise face sanctions. तो हमने देखा कि a series of multinational companies left Iran. Furthermore, European Union announced to continue with the deal. European Union ने announce किया continuation with the deal. Not only European Union ने, but the three respective nations of the European Union, UK, France and Germany. सिर्फ इन तीनों ने नहीं, बल्कि EU ने भी क्या कहा कि हम कंटिन्यू करेंगे with the deal. और in the past, one of the major importer of Iranian hydrocarbon कौन रहा है? Europe, specifically Germany. In the past, one of the major importer of Iranian hydrocarbon Germany रहा है, along with other European countries. ठीक? उसके बाद China, Russia and India have reaffirmed their commitments to continue with the deal. China, Russia, India. अब जैसे कि ये इंटरनेशनल डील है ना, कैसे? India is one of the major importer of Iranian hydrocarbon. The second biggest importing market for India is, exporting market of energy for India is, importing market is Iran. Iran से वो import कर रहा है hydrocarbons.
सबसे बड़ा सऊदी अरेबिया है, दूसरा ईरान है। दूसरा 26% of the overall imports of China are from Iran. 26%। और हमने ये देखा कि ये जो एनर्जी इंपोर्ट्स हैं वो आफ्टर द P5+1 डील रिज्यूम हुए हैं। ड्रास्टिक इंक्रीज आया है इन द इंपोर्ट्स ऑफ दीज कंट्रीज फ्रॉम ईरान एंड दे हैव रीअफर्म्ड देयर कमिटमेंट्स टू कंटिन्यू विद द डील। तीसरा क्या हुआ है, यूएस हैड टू गिव exemptions. Trump had to announce exemptions for the allied countries' engagements with Iran. Trump administration को कई सारे exemptions देने पड़े। For example, India को दो बड़े exemptions दिए गए। One, investment in the Chabahar seaport. दूसरा, the construction of railway line. वो जो रेलवे लाइन बना रहा है, कनेक्ट कर रहा है अफगानिस्तान को विद चबहार सी पोर्ट ऑफ ईरान, फॉर एग्जाम्पल ये। लेकिन मजीद क्या है, इंडिया does not seem to be in a position to reduce its energy imports from Iran, at least in the near future. Foreign Minister की words of India, उनके पास ऑप्शंस नहीं है क्योंकि इतनी क्विकली रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं। Then China has decided to fill the vacuum left by international companies. Xi Jinping, accompanied by a long list of delegates, on his visit to Tehran. Majority of the agreements China made with Iran were energy based. वो जो majority agreements किए वो energy based थे। और वो क्या है? CNPC, China National Petroleum Company, seems to be trying to replace the Western or American companies. ठीक? So US conclusion, US withdrawal from the agreement is a setback. ये बहुत बड़ा setback है, but the deal is not over altogether. ये बहुत बड़ा setback ईरान के लिए है। डॉलर का मसला बनेगा, फॉरेन रिजर्व्स का मसला बनेगा, लेकिन the deal is not over altogether. और ईरान इंटरनेशनली आइसोलेटेड नहीं होगा। और फिर हाँ, एक रीजन अमेरिका क्या दे रहा है, क्यों हम कर रहे हैं कि ईरान हैज इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट ऑन क्या कहते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी। ये इंक्रीजिंग वेपनाइजेशन है, स्पेशली द मिसाइल टेक्नोलॉजी। तो ईरान कह रहा है और इंटरनेशनल प्लेयर्स कह रहे हैं कि P5+1 deal was purely a deal on nuclear issue, wasn't a deal on missiles or other weapons. ठीक है? Okay, next. जो हमने रीजन किया कि सऊदी अरब की वजह से, इजराइल की वजह से, और यूएस रीजन ऑफिशियली दे रहा है, वो ये दे रहा है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहा है। जी, अब दूसरा टॉपिक आखिरी प्लीज। ये बस कर दो। अच्छा, 5 मिनट में माफ कीजिएगा। डीग्लोबलाइजेशन की की पॉइंट्स बता देता हूँ। Now, ग्लोबलाइजेशन क्या है? सिंपल। 1, the world is a global village. दुनिया ग्लोबल विलेज बनी। कैसे?
One, free trade scheme. The removal of the tariff and non-tariff barriers, or the opening of the borders for trade. Opening of the borders for trade. उसमें कई सारे steps हुए for free trade. सबसे बड़ा is the liberal order launched by America in 1940s. तो liberal order उन्होंने launch किया. दूसरा 1995 WTO, 95 था ना? Enactment of WTO. इसी तरीके से कई सारे रीजनल और इंटरनेशनल ट्रेड G20, G7, TPP, NAFTA and more. ये सारा कुछ क्या है फ्री ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन अब हम देख रहे हैं ट्रंप रिवर्स ऑफ द फ्री ट्रेड कॉन्सेप्ट कर रहा है, रिवर्सल ऑफ द फ्री ट्रेड कॉन्सेप्ट कर रहा है. कैसे? One, imposing higher tariffs on foreign products. पहले बता चुका हूँ. Imposing higher tariffs on foreign products. Series of countries के. दूसरा, withdrawal from TPP, Trans-Pacific Partnership से withdrawal. Giving USMCA instead of NAFTA. USMCA, US, Mexico, Canada, USMCA. ये proposed agreement है जो US propose कर रहा है. Exit किया from NAFTA और propose कर रहा है USMCA. तो एक बड़ा step towards deglobalization is this. दूसरा बड़ा step towards deglobalization is इसी context में increasing barriers on free mobility. Increasing barriers on free mobility. Now, हमने देखा free visa system in Europe और no visa और Schengen visa. हमने no visa system देखा in क्या कहते हैं ASEAN countries, and US ने क्या कर दिया? Visa on arrival. और majority of the countries in the world जो tourism को promote करते रहे, वो visa on arrival देते रहे. पाकिस्तान भी अभी सोच रहा है 56 countries या 58 countries को visa on arrival. So US ने देना शुरू कर दिया और US जो दुनिया में सबसे ज्यादा मल्टीकल्चरेशन की रिप्रेजेंटेशन बनी, a society based on multicultures, different flavors of cultures रहे, क्योंकि open of society रही. Now it is increasingly getting closed society under Trump. One, सबसे पहले ban on the citizens of 5 Muslim countries. 5 मुस्लिम ममालिक के सिटीजन पे बैन. उसमें कई सारे हैं, ईरान है, सीरिया है, लीबिया है, इराक है वगैरह, सूडान है. ठीक है. दूसरा, the construction of wall with Mexico that is resulting into the financial shutdown for a week. Government shutdown कर रही है. और वो बेसिकली वो क्या है? फैक्टर क्या है कि Trump wants to build the wall. और तीसरा हमने क्या देखा? इसी मैक्सिको के related coercive methods, oppression patterns adopted by Trump against the Mexicans, immigrants from Mexico. जिसमें क्या किया? Separation of the children from their parents. For example, parents-children separation. So deglobalization की तरफ दूसरा बड़ा step.
तीसरा बड़ा स्टेप टुवर्ड्स डीग्लोबलाइजेशन इज द विड्रॉल फ्रॉम दिस, क्या कहते हैं, P5+1 पढ़ा चुका हूं। फोर्थ, डीग्लोबलाइजेशन की तरफ अनदर मेजर स्टेप इज द विड्रॉल फ्रॉम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट COP21। बाय द वे लास्ट COP कहां पे हुआ है? पोलैंड में। सिटी और ये कौन सा COP था? और उससे पहले कहां पे हुआ? मोरक्को में हुआ। बॉन में हुआ। उससे पहले मोरक्को में हुआ। 16 मोरक्को, 17 बॉन, 18 ओके। सो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से निकलना अनदर मेजर स्टेप। ये फिल्मों को मैंने पढ़ाया था पहले। जी सर, नहीं पढ़ाया था। अच्छा, now the first ever international agreement on climate, or COP, that is called a really successful agreement, जो सही मानों में सक्सेसफुल एग्रीमेंट था इंटरनेशनल लेवल पे। उसकी सबसे बड़ी बातें क्या थी? The developed world, including US, agreed on carbon cut-off plan. The developing world, led by China, India, South Africa, also agreed on carbon cut-off plan. Though not only countries but multinational companies agreed on carbon cut-off plan. वो भी कार्बन कट ऑफ प्लान पे एग्री कर गया और ये ट्रांसफर कर रहे हैं ऑन टू ग्रीन एनर्जी। और 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में कमी लानी है हमने, सेंटीग्रेड जो भी है, -1.5 पे की बात है। अब वो क्या कहानी है, लेकिन वहां तो 2 था, वहां पे 2 था जी। ओके, नेक्स्ट मैं आपको अभी जो 18 का हुआ -1.5 की बात नहीं कर रहा हूँ ना। नेक्स्ट उसके बाद फिर मजीद क्या हुआ? The agreement was made binding. ये एग्रीमेंट क्या हुआ? बाइंडिंग हुआ। Every country was supposed to make cuts by 2022 या 23। हर मुल्क ने कट्स करने थे और एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी थी, कंपनीज ने भी, कंट्रीज ने भी। सो ग्लोबल कंसेंसस बना, रीच कर गया पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। और उसमें मेजर रोल किसने प्ले किया? 3 कंट्रीज, US, China and France। US, China and France ने मेजर रोल प्ले किया, लेकिन उसका मेजर ड्राइवर अगेन कौन था? ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन था। ट्रंप वहां से भी निकल गया। निकलने की वजूहात क्या दे रहा है? क्लाइमेट चेंज इज अ मिथ। The rise in temperature is a natural cycle. ये एक नेचुरल फिनोमेना है, ये साइकिल है जो गुजर रहा है। और तीसरा वो क्या कह रहा है? हाँ, उसकी क्या कहते हैं? The influence of coal industry on Trump। जो कोल इंडस्ट्री है उसका इन्फ्लुएंस ऑन ट्रम्प। और फिर वॉर इंडस्ट्री या वेपन इंडस्ट्री का इन्फ्लुएंस ऑन ट्रम्प। ऐसे और सच मोर स्टेप्स टुवर्ड्स डीग्लोबलाइजेशन।
po, kasi wag mo para